बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट विखे करवाई जा रही 3 रोज़ा राष्ट्रीय कांफ्रेंस सिमूवर्स 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਿੱਖਿਆਵਿਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਜਾਤ ਚੰद्रकांत सेठ, चेयरमैन नेशनल मेडिसिन कमीशन मेडिकल कमीशन, डॉक्टर अनिल कुमार जे नायक, नेशनल प्रधान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर यज्ञ उमेश शुक्ला, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनस ਅਤੇ डॉक्टर नीलम मोहन, प्रधान इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस तो इलावा सरदार गुरदित सिंह सेखों विधायक ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट BFUHS, श्री अरविंद कुमार रजिस्ट्रार, डॉक्टर दीपक जैन पट्टी, डीन कॉलेज डेवलपमेंट, देश भर ਦੇ सीनियर फैकल्टी मैंबर्स, कंसलटेंट, रेजिडेंट डॉक्टर्स ਅਤੇ पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी भी हाजिर सन। इस मौके मेहमानों का स्वागत करदे प्रोफैसर डॉक्टर राजीव सूद, वाइस चांसलर BFUHS ने कहा कि सिमूवर्स 2026 ਨੂੰ एक ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਕਰਸ਼ਣ 3 ਸਮਝੌਤਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ IAP, कंसोर्टियम ऑफ एक्रेडिटेड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन CAHO ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਲਿਬਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਡੀਸਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੈਕਚਰ, ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਲਾਈਵ ਡੈਮੋਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਗਰੋਵਰ ਪੱਟੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਅਤੇ ਆਯੋਜਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਿਮੂਵਰਸ 2026 ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਸਿਮੂਵਰਸ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ। We are today talking about the hard skills, and similarly there are soft skills. We are going to add the program online digital learning and ODDL, which is the part of NEP, National Education Policy 2020, and also internationalization of our education. So these are our goals. We have also established the cell for sustainable development goals. Whatever we start should have the life of sustainability. All sub-later we have covered under insurance, under warranty, and for this CMC for next 10 years, so that any sub-later is not lying idle, and it is continuously upgraded, and that also is in build. We have also started for benefit of all the students amongst 175 plus institutions of e-resources, and it is a huge library of e-resources where all the medical books, physiotherapy books, paramedical, whatever is available, that all is accessible to each and every faculty and student on phone. Everybody has the unique ID, and they can learn. If they miss the classes, they can recover it from archives. They will not miss anything. And also we have the other e-resources
where all e-journals or the notes etc. are available. For the current, we have tied up with the EBSCO and Medicis, and it is doing wonders. Everybody is also advised, those students and residents who are here, who are keen learners. I think they will use these all facilities, and they will use all the simulators which has been acquired, and we will visit some of these virtual dissection table, orthopedic, whatever you say is there. And I am again at the end very, very thankful that you have come to this holy land of Baba Farid, who was 250 years before Guru Nanak Ji. And this is, we are lucky that we are working in this city, in this Faridkot. Very, very thankful. I am very, very thankful to you all for attending to this function and making it successful. Dignitaries on the dais, Mr. Arvind Kumar ji, Professor Yatna Shukla ji, Shri Gurmeet Shekhon ji, MLA Faridkot, Professor Rajiv Sood ji, Vice Chancellor Baba Faridkot University, Professor Anil Nayak, National President of Indian Medical Association, Professor Neelam Mohan ji, National President of Indian Academy of Pediatrics, and Professor Deepak Patil, Dean of the Baba Faridkot University, all the dignitaries of the dais, all the students, faculties, ladies and gentlemen. On behalf of the NMC, on behalf of the National Board of Examination in Medical Sciences, I extend my gratitude to Baba Faridkot University and organizers of SAMI Awards 2026. I remember a couple of the last month or before, Professor Rajiv Sood ji told me that you must have to visit our university at least in the near future. I'm connected with the Baba Faridkot University for the last few years because our previous member of the National Board of Examination Medical Sciences was Professor Raj Bahadur. So he also used to invite me so many times, but for some reason I couldn't reach there. But this time I was just trying to come here, and then this was the opportunity to interact with you. Coming to today's workshop, now we must understand that we are at the moment, the one drive which you all are seeing very openly is increasing the number of seats across the country with the medical undergraduate and postgraduate studies. Our biggest challenge, it's a hard challenge, is to maintain the quality of education and to enhance the quality of education. Now, if we look at our golden past, that we have given the great doctors to all over the world, and our great teachers and great mentors in the past. And we relied totally on physical education at that time because education was never been such complex or such technical. Honorable Shri Gurudev Singh Ji, Honorable Dr. Vijay Sheth Sir, respected Shri Dr. Anil Kumar Sir, respected Dr. Rajiv Sood Sir, respected Dr. Maturi Madam, Dr. Bhati Sir, respected Dr. Arvind Kumar Sir, who is ex-secretary of NCAHP, distinguished faculty members, esteemed clinicians, researchers, healthcare educators, and dear participants. It's with great pleasure and deep sense of honor
that I am here today to join for the inaugural session of SIMU Verse 2026 Advanced Surgical Skill Training and Interventional Skill Training Workshop. My sincere gratitude to Professor Dr. Rajiv Sood sir and entire team of Baba Farid University of Health Sciences for this kind invitation. I had heard a lot about Baba Farid University and I was just looking for the chance to visit here, this pious place, and when I got a phone call from Shri Arvind Kumar sir, I could not resist myself. Thank you very much. As we all know, Baba Farid University of Health Sciences has consistently demonstrated visionary leadership in medical education and capacity building. Your commitment to innovation and excellence is evident in this timely and forward-looking workshop. SIMU Verse 2026 is not merely an event. It's a significant step towards transforming healthcare education through simulation-based learning where every specialty meets simulation. As we all know, rising burden of non-communicable diseases, diabetes, cardiovascular conditions, road traffic injuries, alongside the continuing need for strong maternal, reproductive, emergency and trauma care services, simulation-based training holds immense potential to address these realities by preparing competent healthcare professionals equipped to meet local needs efficiently. Today, simulation technology stands at the forefront of competency-based medical and allied health education. High-fidelity simulators for laparoscopic surgery, robotic surgery, endovascular interventions, knee arthroscopy, IVF and reproductive medicine, and other procedural skills provide safe, repeatable, and realistic environment for learning. These tools allow healthcare professionals to master complex procedures without compromising patient safety by eliminating risk associated with learning. Good afternoon. In today's SIMU Verse 2026, organized by Baba Farid University of Health Science, our chief guest, Dr. Abhijat Seth, Chairman of National Medical Commission and National Body NBMS, Dr. Yagnaben Shukla, Chairman NCAHP, Dr. Rajiv Sood, Vice Chancellor Baba Farid University, Dr. Neelam Mohan, President Indian Academy of Pediatrics, Sri Gurdeep Singh Sikonji, MLA of this area, Sri Deepak Bhattiji, Dean, Sri Arvind Kumar, the Registrar, and all the invited guests, faculty, and dear students. Everybody has already said about the importance of simulation technology in medical fraternity. We all know change is always invited, change is permanent. परिवर्तन संसार का नियम है. When we were students during our MS orthopedic, what way we are doing surgeries are now out of date. Now minimal invasive surgery, scopes are there, so we have to change with in the technological era and artificial intelligence era. We have to adopt it. Because what I have rightly said that if you change after change, you will survive. You will change with the change, you can success. But if you lead the change, you become the leaders. So you have to accept the change and make the change. What is education? Our past President of India, Sarvapalli Radhakrishnan rightly said कि शिक्षण क्या है?
एजुकेशन क्या है? जो मस्तिष्क को सोच दे, हाथ को हुनर दे, स्किल दे, और हृदय को कंपेशन दे, हृदय को दया दे। ये तीन चीज हम एजुकेशन से लेते हैं। दैट इज आई एम टेलिंग दिस बाबा फरीद यूनिवर्सिटी is not only giving the education, because routinely education is the teachers provide the information which is already in the textbook to the students. All the textbook have already there everything. They are providing the information, but with the information between the lines, good teacher put their example, put their knowledge, and give a good education. So people can think about it, do innovation, research, and become an excellent student. So that is the education. I congratulate Dr. Sood for organizing this simulation in multi-speciality here, because we have seen many simulation workshops, but it is particularly limited to particular speciality. But it is a multi-speciality simulation workshop. So I congratulate all the organizing committee and all the members. Dr. Eknaman rightly said, in the era of day by day, the infections rate, infection disease are day by day decreasing. But non-communicable disease like diabetes, hypertension, cardiological disease, and everything, they day by day increase because of our lazy lifestyle. Very lifestyle. How many of you are doing regular exercise for 30 minutes? Please raise your hand. How many of you doing regular exercise? Only 2%. आज ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत कुछ, क्योंकि मेरा खेतर तो नहीं सी मैडिकल, पर मेरा खेतर स्पोर्ट्स सी। पर जो मैं यूनिवर्सिटी का मैंबर बनया तो बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि साढ़े पूरे भारत के विचों वख-वख ट्रेड के वख-वख नामी डॉक्टर साहबान जो आके इतने बोलते हैं तो बहुत कुछ इन्हों को सीखने को मिला। और असी बहुती बारी की लैके फरीदकोट बहुत दूर है। जो पहले ने अक्सर गल करता सी खेडन जाना तो पूछना फरीदकोट, तो उन्होंने कहना फरीदकोट कितने फरीदकोट पैंदा, कदे बठिंडा दसना पैंदा या फिरोजपुर दसना पैंदा, या लोग पुछते अमृतसर तो कितना। तो अज की डेट के पूरी दुनिया के जो फरीदकोट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है, वो इन्होंने शख्सियत क्योंकि इन्होंने आने वाली इतने साढ़े स्टूडेंट्स का भी हौसला बढ़ता है, साढ़े डॉक्टर साहबान का भी हौसला बढ़ता है। क्योंकि बहुत बारी इन्होंने शख्सियतों को जो तुम मिलना हो तो कई बार महीने महीने की 2-2 महीने की वेटिंग होती है भी इन्होंने जो तुम टाइम लैके कोई पेशेंट दिखाना। तो अज साढ़े लिए सुभाग है कि ये फरीदकोट के आके सानू दर्शन दे रहे हैं। सो मैं फरीदकोट नगरी वालों, बाबा फरीद की इस पवित्र धरती वालों सारे ही मौजूद शख्सियतों के आउन के जी आया और आस करता कि इस तरह साढ़े भारत की सेवा करते रहन और साडा देश है वो होर तरक्की करता रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। We have Professor Sood and from the education, Dr. Abijah, and administrator who's ruling the country, the hearts, Dr. Anil Nayan. And with that, it was such a privilege today to meet a lady who's so charming, Dr. Yatna Shukla and Arvindji, who are doing so much for the allied professionals. And of course, Bhatiji, my neighbor sitting there. It was a pleasure to understand more about Faridkot and how a Sufi became so popular from 12th to 18th century. And this, the name of Baba Farid comes from the Sufi who did a lot of poetry. So this amalgamation of everybody around. And while you could see an orthopedician, a surgeon, a urologist, and a cardiovascular, I was thinking how to emotionally blackmail these people. So my emotional blackmail to all of you, especially Abijah doctor, is that while Dr. Nayak said that there is 146 crore population in India, remember
26 crore, which is the largest population of children globally, is in India. 23 million newborns are born in India every day. And do you know what is the statistics of the postgraduate seats that we have? The postgraduate seats that are available in pediatrics is around 3,500 MD and 1,800 plus the DNB seats. So I would put it still less than 5,500 of the postgraduate seats. All of you एक जन आंदोलन बनने की जरूरत है और वो जन आंदोलन तब बनेगा अगर आप सबको ये पता चले कि कब किसको क्या खाना चाहिए. Myself, Dr. Jaspreet, Principal, University Institute of Allied and Healthcare Sciences, presenting before you a brief introduction of various courses run by Baba Farid University of Health Sciences. About Baba Farid University of Health Sciences, university was established at Faridkot under the Act of Punjab State, Act number 18 of 1998, in the name of great Sufi Sheikh Farid Ganj Shakar. The purpose of establishing the university was to affiliate teaching and ensuring proper and systematic instruction, training and research in modern system of medicine and Indian system of medicine. There are affiliated BAM we have in university. We have 9 medical colleges, 14 dental colleges, 122 nursing colleges, 11 physiotherapy colleges, 1 pharmacy colleges, sports medicine college and allied and healthcare colleges. We have constituent colleges of the Baba Farid University are Gobind Singh Medical College, Faridkot, University College of Nursing, University Institute of Pharmacy, University Institute of Allied and Healthcare Sciences, University Institute of Physiotherapy, University Institute of Physiotherapy Faridkot, State Institute of Nursing and Paramedical Sciences Badal, Institute of Nursing Goindwal Sahib, University Institute of Nursing Jalalabad, Advanced Cancer Institute Batinda and University Center of Excellence in Research Faridkot. ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏ, ਟੈਕਟਾਈਲ ਫੀਲਿੰਗ, ਟੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਫਿਡਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਤੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ बढ़ेगी। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ और प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी सारा कुछ बढ़ जाएगा।
तो ये सारे सिमुलेटर मल्टी स्पैशलिटी ਵੱਖ-ਵੱਖ स्पैशलिटीज़ थे, जिस ਵਿੱਚ सर्जरी, गायनी, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, वैस्कुलर सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, इंटरवेंशनल, ये सारियां दी सारियां ਜਿਹੜੀ अलग-अलग स्पैशलिटी हैं वो सारियां एक ही नाल एक ही छत ਦੇ ਨੀਚੇ इंडिया ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ऑर्गेनाइजेशन ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਮੂਵਰਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਜ਼ਨ 1 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਚਿਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਸਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ IMA ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਗਨਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਯਗਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਨਾਇਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 3 ਤੇ 5 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ। पूरे हिंदुस्तान के सारे मैडिकल कॉलेज तो उन्होंने एजुकेशन ट्रेनिंग वो सारी रेगूलेट कर दी है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तो एथिक्स भी रेगूलेट कर दी है। वो सारी अभिजीत सेठ जी साढ़े नाल अज बैठे हुए हैं। ये साढ़े इंस्टीट्यूशन वास्ते, साड़ी यूनिवर्सिटी वास्ते बहुत फख्र दी समा है कि ये जी मूवमेंट है असी अज विटनेस कर पा रहे हैं। हिस्टोरिकल टाइम है ये अज का कि सारी रेगूलेटरी बॉडीज़ ते IMA के प्रेजिडेंट साढ़े नाल ते साड़ी फैकल्टी ते बाकी इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स नाल। नमस्ते। आज इधर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है ये सिमुलेशन ये कॉन्फ्रेंस करके। मैं नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस जो कमीशन रेगुलेटरी बॉडी है 57 प्रोफेशंस की उसकी चेयरपर्सन हूँ और उसमें जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड रेगुलराइज करने के लिए अब तक हमने 17 करिकुलम रिलीज़ किए हैं जो 28 प्रोफेशन को कवर करता है और 2026 ऑनवर्ड्स ये सभी इट इज़ मैंडेटरी कि ये सभी करिकुलम को फॉलो करना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। थैंक यू। आज बाबा फरीद मेडिकल हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी में साइमी वर्ष 2026 में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये वर्ल्ड का मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एसोसिएशन है। हम भी कुछ एलाइड में हेल्थ प्रोफेशनल का कोर्सेज चलाते हैं जिसके IMA के और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के MOU भी है और वो कोर्सेज की वजह से जो स्किल डेवलपमेंट बच्चों में होगी और जॉब अपॉर्चुनिटी होगी उसकी वजह से आज मुझे मौका मिला है कि मैं यहाँ आया हूँ। डॉक्टर सूद जो हमारे IMA के भी मेंबर हैं, हमारे सीनियर लीडर भी है और उन्होंने हमें मौका दिया कि यहाँ आने का, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये सिमुलेशन कोर्सेस है जो स्किल डेवलप करते हैं वो सभी मल्टी स्पेशलिटी में। आज के ज़माने में इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो एक कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेंट है, जो बच्चे पार्टिसिपेंट लेके अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं तो आने वाले समय में वही पेशेंट को अच्छी सारवार देंगे, अच्छी ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा मेरा कहना है। गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर अभिजीत सेठ, चेयरमैन नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया से आज फरीदकोट आया हूँ और आज इतने दूर के रीजनल एरिया में
ये एकेडमिक संस्थान जो क्लिनिकल एक्सेलेंस का एक प्रतीक है, वो वहाँ मुलाकात करने में बहुत खुशी हुई। एंड मैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के ऑर्गेनाइजर्स एंड वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव सूद को बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट एंड संस्थान क्रिएट किया हुआ है। एंड आज जो सिमुलेशन की वर्कशॉप चला रहे हैं, जो एडवांस ट्रेनिंग की वर्कशॉप हैं, उसका मकसद है कि अभी के जनरेशन के डॉक्टर्स को फॉर्मेटिव ईयर्स में स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग दे, उससे पेशेंट सेफ्टी एनहेंस होता है, पेशेंट सेफ्टी एनहेंस होता है, स्किल बढ़ता है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है ये, और उससे ये फ़ायदा होता है कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कम होता है स्किल के ट्रेनिंग की वजह से, एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर बनता है। तो मैं फिर से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव सूद जी को